Assalamu alaikum. Thank you for giving us a chance to interview this, and we're so much thankful for the organization GSL. We have come here and seen many things about the issue we're already researching on. So basically, we've come here for our project, which is basically about language barriers faced by non-native speakers who are planning to go abroad for better career or work opportunities. And I am my group's communicator, and Eman Usman, who As is researcher. Yes. It's lovely to have you both here, Lydia and Eman both. Let's dive deep into your interview. Yes. So our first question is, what are the most common language barrier faced by non-native English speaker when preparing for standardized English exams? I feel like language barriers तो काफ़ी होते हैं. For example, they are not so good with grammar, they are not so good with their vocabulary, और उन्हें इतनी technicalities नहीं पता होती. लेकिन जो environmental barriers होते हैं वो बहुत overpower कर जाते हैं उस चीज़ को. We have some students who are willing to learn, लेकिन उनके लिए एक ये चीज़ बहुत वो इसको एक taboo feel करते हैं कि we need to learn English. It's been 16 years of my education, and still when I want to appear in IELTS, I'm here to take some English classes. They are very much afraid to embrace that fact. So the second question is, how do you tailor your coaching approach to address these language barriers? अच्छा, इन language barriers के लिए first of all, our faculty is well qualified. We are partners with British Council, and our CEO, Mr. Mubarak Ali Khan, he was an examiner in British Council himself. तो you can see कि हमारा जितना भी curriculum है, हमारे जितने भी instructors हैं, they are well trained for that. तो whenever student comes over here, he or she is in the right hands. Moreover, जो हमारे बेसिक कोर्सेज होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस के जो इश्यूज होते हैं एंड स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद देयर वोकैबुलरी एंड समथिंग विद दैट लाइक दैट, उसके लिए हमारे नोट्स होते हैं. वी हैव सम ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो दे डू हेल्प द स्टूडेंट्स. What strategies do you recommend for improving English language proficiency, especially for standardized exams? इसके लिए स्ट्रैटेजीज काफ़ी सारी हैं, बट आई वुड टेल यू गाइज व्हाट आई डू नॉट रिकमेंड. I do not recommend you to translate it into Urdu and then into English, because it's a very complicated process, and that's one of the most common approach in most of the students. When you want to speak in English, you also need to think in English, and then you also need to dream in English. Okay, so you don't have to translate it into Urdu all the time. It's like आप अपने आप को खुद ही एक मसले में डाल देते हो. अब ज़्यादातर स्टूडेंट सीखना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच बहुत गलत होती है. So I'll proceed with the next questions. So basically, what do you think? Do non-natives face challenges while giving standardized tests because of language barriers, or is it just a myth? Well, in case they are prepared enough, it's good to go. But उसके अंदर उन्हें जो ज़्यादातर challenges face होते हैं, they know what is to be done, but you need to get over your nerves. We do know that English is not our native language. हमारे पास इतने students इस तरह के होते हैं जो तैयारी करके जाते हैं, but in that specific moment they get confused. और जितने भी standard tests होते हैं, they are for like IELTS है जिस तरह it's for 3 hours. तो 3 hours continuously जब आप एक जगह बैठे होते हो, you have to attend the listening part, the reading part, the writing part and the speaking part. तो वो एक जो mental pressure होता है, और आप जब continuously without any break जब किए जा रहे होते हो, तो I think वो चीज़ ज़्यादा उनके लिए struggle बनती है. Yeah. Another question is, does having basic English skills help in creating a difference or making the test less challenging? Oh my god, it helps a lot. Honestly, it helps a lot. अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है आइल्स की प्रिपरेशन के लिए, तो हम सबसे पहले उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर्स डू. वी डू हैव अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ओवर हियर, एंड उस डायग्नोस्टिक टेस्ट में वी हैव टू असेस देयर बेसिक लैंग्वेज लेवल. इफ़ वी फील लाइक स्टूडेंट की बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हम उन्हें डायरेक्ट आइल्स की क्लास में इंगेज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी अनफेयर टू द स्टूडेंट, एंड हमें पक्का पता है कि ही विल नॉट बी एबल टू कोप विद इट. तो अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं, तो आपके लिए लर्निंग और आसान हो जाती है. That's great. Another question is, personally, do you believe that
standardized tests help in creating more work opportunities for teenagers? Yeah, they actually do. इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. वी डू ऑफर काउंसलिंग एज वेल. तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं फॉर द स्टडी अब्रॉड, अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने OET की तैयारी की है, और कोई और स्टूडेंट है उसने IELTS की तैयारी की है, एंड देयर इज़ अ स्टूडेंट जो बगैर किसी लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट के उससे बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है. ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस, बिकॉज फॉरनर्स दे आर ट्रस्टिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस कि ये लोग एक बच्चे को जो स्कोर दे रहे हैं मीन्स इसका इंग्लिश का लैंग्वेज लेवल इतना है. तो अगर मुझे पहले एक जॉब जो फूड डिलीवरी की मिली थी या सिक्योरिटी की मिली थी, इफ़ आई शो दैम माई IELTS और इफ़ आई शो दैम a relevant standard test which shows कि I am good with my language, I am good with my communication. How do diverse educational backgrounds cause differences in practicing for these standardized testings? डाइवर्स एजुकेशन बैकग्राउंड्स, Yes. या इसका एक फ़र्क तो पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर मैंने इंग्लिश पहले कभी नहीं पढ़ी एंड मुझे कोई टेस्ट देना पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल SAT, Yes. तो फिर मुझे स्क्रैच से वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एंड देन इट विल गेट डिफ़िकल्ट फॉर मी. अगर मेरी इन द एंड अगर मेरी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है देन मुझे कोई इशू नहीं होगा. That's good. Are there any cultural or contextual factors that influence how non-native English speakers approach standardized English exams? Yeah, there are. In Pakistan, ज़्यादातर एक टाबू ये बना हुआ है कि हम लोग डन बेस पे IELTS करा लेंगे या डन बेस पे कोई टेस्ट करा लेंगे जस्ट टू गेट अवे विद इट. सो दैट इज़ नॉट द केस. यू विल गेट कॉट एंड यू नीड टू प्रिपेयर दैट टेस्ट. हमारे सोसाइटी को और हमारे जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टेस्ट ना सिर्फ आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दैट सर्टेन यूनिवर्सिटी और फॉर दैट सर्टेन जॉब. इट्स गुड फॉर यू. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, यू वॉन्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम. आप अगर उस यूनिवर्सिटी में चले जाओगे भला, लेकिन आपको वहाँ पर कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, उस जॉब के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, यू विल बी स्ट्रगलिंग विद योर प्रमोशंस. एंड ये चीज़ें ऐसी हैं कि छुपती नहीं हैं कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो वो इट्स वेरी एविडेंट कि आपने IELTS दिया है और आपके इतने बैंड्स हैं, तो इज़ इट द रियलिटी और नॉट. Sure. Can you share any success stories or examples of students who you have seen successfully overcome these language barriers to achieve their desired exam scores? Well, we have a lot of success stories in GSL. I won't be taking names, but we had a student. She when she came, she came with her son. तो उनके हमने जो जस्ट एज आई मेंशन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, तो वो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट सॉल्व करी थी उन्होंने अपना नाम भी अपने बेटे से पूछ के लिखा था कि व्हाट इज़ द स्पेलिंग, इसके स्पेलिंग्स क्या है. तो वन ऑफ आवर रियली गुड इंस्ट्रक्टर्स, उनकी तरफ हमने उन्हें रेफर किया. शी वाज एनरोल्ड इन ESPC एंड IELTS बोथ. तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी माशाल्लाह. मोर ओवर वी हैड a student who only knew Persian language, and we have had Afghanis as well who were struggling with their grammar and something like that. लेकिन in the end we have a very good faculty. and अगर आप हमारे चैनल में सक्सेस स्टोरीज की साइड वाली प्लेलिस्ट में जाएं तो you will find many such stories. Great. Thank you so much for the interview. We're heartily delighted. Yes. Thank you so much, Lydia and Eman. I am wishing you best of luck for your project. Thank you so and much. I hope that you guys get a distinction. Thank you so much. Means a lot. Thank you. Thank you for having me.